A very good afternoon to you all. Today I will discuss a very basic lecture regarding steam power cycle. Okay, in steam cycle, this type of uh, processes and cycles occurs. That those things I will discuss now. I proceed further. What is this? Here you can see in this slide. Okay, in this slide you can see the term related to the steam cycle. Which type of cycle, which type of engine follows this type of cycle? Actually, that type of engine would be related to the external combustion engine. What is the literally meaning of external combustion engine? Basically, what is the main work of engine? Engine converts the heat energy into mechanical work. Okay, when the heat energy is converting into the mechanical form of work, then what happens? Definitely, a system processes a particular type of cycle. If the steam engine processes the steam cycle, then definitely a main scientist behind this cycle would be a particular name. Okay, Rankine gave a cycle which is used in power plant generation in the form of steam cycle. Okay. Now here you can see power plant, इलेक्ट्रिक स्टीम पावर प्लांट्स. सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि एक स्टीम पावर प्लांट है, कोई भी पावर प्लांट है तो वहाँ पे क्या होगा, पावर जनरेशन का काम होगा. पावर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, मैकेनिकल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से पावर प्लांट डिजाइन करते हैं. तो स्टीम पावर प्लांट में बेसिकली क्या जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होगी. ठीक, तो इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं. ठीक है, स्टीम पावर प्लांट को फीजिबल बनाने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत है. ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स देख सकते हैं आप. बॉयलर है, बॉयलर के बाद टरबाइन, देन कंडेंसर, देन कंडेंसेट पंप. ठीक, अब यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं. तो भाई हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग काम होगा. ठीक है, हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग वर्क होगा, अलग अलग प्रेशर होगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा. ठीक है, कभी क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, कभी क्या होगा, प्रेशर कम होगा, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कभी टेम्परेचर कम होगा. कभी कभी ऐसा भी होगा कि फेज चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर वही रहेगा, तो वहाँ पे हम लेटेंट हीट की बात करने लगेंगे. यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपोनेंट टरबाइन है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टरबाइन? बेसिकली टरबाइन इज a device that converts heat energy into the mechanical work. Okay. Heat energy from which source? I think that steam having some amount of heat, and that further goes to the various plates mounted on the turbine shaft. And what happens when the steam strikes on the plates, because the plates are mounted on the shaft, and that's why next step the shaft will rotate. And when the shaft will rotate, then what happens? The shaft will rotate, then what happens? Actually, this shaft is further connected to the generator, and you know what is the main function of generator. When the generator gets some amount of mechanical work, then this mechanical work would be converted into the electricity. It means electricity generation would be in existence with the help of turbine. That's why the turbine is allocated over here. Now, the next part is condenser, because in initial form you got steam, and when some waste energy would
outside for the waste form, then what happens? Condenser receives that energy to lowerize the pressure. That means condense the steam, and that would be that will decrease the pressure as well as temperature of that working substance. And that's why the steam would be started to convert from vapor phase to the liquid phase, and that's why. And after that, that liquid would be subjected to subjected to maximize the pressure as well as temperature. That's why here water pump is allocated. Then after, when the fluid substance goes through the water pump, then this water pump generates high pressure water. High pressure water, it means we get some fluid work. But here you have to keep very important talk in your mind. That is, the turbine is work producing device while the pump is work consuming device. That's why the pump is consuming some amount of work, and this consuming work is very lesser in comparison to this work. And this work is what actually this work is performed by the turbine. Okay. Now when the high pressurized water go through the boiler, then what happens? Because this treated water go inside the boiler, then what happens? External heat source provides some heat to the boiler, and this treated liquid starts to convert in vapor. Okay. And then that vapor will would get some amount of heat more and more, and that's why the superheated steam will be generated. And after that, high pressure, high temperature superheated steam will go inside the turbine. And in such a way, the cycle is completed, and this cycle is known as a Rankine cycle. Okay. And what we have discussed here, we have discussed that in steam power cycle or in Rankine cycle, at this particular type of cycle, this cycle is this cycle come under the category of what? This cycle will come under the category of power cycle, because this cycle produces power. Okay. And why this cycle? If I ask you that if you have if you see a diagram related to PV, pressure as well as volume, and the PV diagram is drawn in clockwise manner, then you can see here the all thing will go in clockwise manner. And already told you in the power cycle, if anything will happen in clockwise manner, then that cycle is known as power cycle. So this cycle will come under the category of power cycle. Okay. Now in the next step, because the steam is used as a working substance, that's why this cycle is known as steam power cycle. Okay. And because the steam power cycle is used in such type of plant, that's why this plant is known as steam power plant. And main motive of the power plant is what? That is power generation. Now here you can see this Q1 amount of heat is supplied to the boiler, and what the things exist in the boiler? This feeded water exists in the boiler, or you can say the working substance is fed inside the boiler, and in the form of working substance, the steam is here.
sorry, the feeded liquid is here. Okay, what is the Q2 in the form of condenser? All you know that condenser extracts some amount of heat, and that's why the temperature of steam goes in downward direction. That's why the value decreases, and the region is in the form of result that the Q2 is going outside. What is the Q2? Q2 is equal to heat rejected from the working substance. And these values would be represented in the form of किलोजूल पर kg. ठीक है, एनर्जी हीट की बात करो तो पर kg ही होगा. ठीक, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए ज़रा, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. हियर you can see this diagram. Okay, before to discuss this diagram, I would like to explain some basic symbols represented for work done. What is the WT? Actually, the WT is work transferred from the working fluid. What the work transferred by the steam with the help of turbine, that is WT. And WT is the work output, and this is the result. And further, this amount would be transferred to the generator to transfer, and this transferred the work done would be converted into the electricity. Okay. What is the WT? Actually, the WT work transferred into the working fluid inside the pump. Already told you the work done inside a work done is consumed by the pump is very lesser in comparison to work done performed by the turbine. Okay. Now here you can see from process 4 to 1. What happens? From process, I think something is missing. ये 1 to 2 है, 3 to 4, 4 to 1, ये प्रोसेस है. यहाँ पे 4 है, ये 4 है और ये 1 है. ठीक है, 4 to 1 प्रोसेस में आपको बॉयलर दिख रहा है. ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इसमें जा रहा है. फीडेड अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 1 किलोग्राम. ठीक है, ये बॉयलर में जा रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा भाई? स्टेज चेंज होगा. कैसे स्टेज चेंज होगा? सुनिए, स्टेज चेंज कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे बॉयलर में मान लीजिए फीड वाटर गया. ठीक, तो फीड वाटर जैसे गया तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से फर्नेस से इसको क्या दे रहा है? हीट दे रहा है. ठीक है, हीट कैसे दे रहा है? बाहर से. इसलिए कैसा इंजन होता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है. और इंजन का काम क्या होता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो जो लिक्विड है वो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली वेपर में. और वेपर का फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ 1 to 4 to 1 प्रोसेस कैसा है? हीट सप्लाई कर रहा है तो यहाँ स्टेट चेंज होगा. ठीक है, स्टेट चेंज होगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर के वेपर में कन्वर्ट करना होगा. तो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लैटेंट हीट ये स्टेट चेंज प्रोसेस को कर होगा. ठीक, देन प्रोसेस 1 to 2 क्या होगा? फ्रॉम 1 to 2 टर्बाइन है. टर्बाइन स्टीम से एसोसिएटेड जो हीट एनर्जी होगी इसको फर्दर कन्वर्ट कर देगा वर्क डन. तो ये WT है. इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं. और अगर आपको पसंद है ये स्लाइड तो देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द इम्पॉर्टेंट नोट्स. नाउ फ्रॉम 2 to 3 व्हाट हैपेंस? ये जो बाहर से जो फाइनली जो वेपर एक्सट्रैक्ट होगा 1 किलोग्राम ऑफ वाटर भी कहते हैं, उससे हीट बाहर चली जाएगी. फाइनली हमको क्या होगा? स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में. ठीक है, यहाँ पे स्टेट चेंज होगा फिर 2 to 3. देन 3 to 4 में अगेन पंप कुछ वर्क करेगा, फीडेड वाटर से टेम्परेचर बढ़ेगा. और 3 to 4 प्रोसेस में जाते जाते यहाँ पे इसका स्टेज चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पंप. ठीक है, नाउ दिस इज योर रैंकाइन साइकिल.
Rankine cycle is all about this formula, that is the Q net for the cycle, the summation of Q net for the cycle equals to the summation of work done for the cycle. Now, the difference of heat supplied to the heat extracted is denoted to the Q net, total Q net, and the difference for the turbine work as well as pump work is denoted the total work done. If we divide this, if you divide the net work done to net work done to the heat supplied Q1, then we get the cycle efficiency. If this value will be higher, then the efficiency will be lower. If this value is lower, then efficiency will be higher. If this amount is higher, डेफिनेट एक्चुअली क्या होता है ना कि डब्ल्यू के कंपेरिजन में कमी होता है. नाउ फाइनली इन दिस स्लाइड यू कैन सी अ डायग्राम रिलेटेड टू द रैंकाइन साइकिल. एक्चुअली तो रैंकाइन ही एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, एक साइकिल ईजाद की, और इस साइकिल में जैसे जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर और एंट्रोपी का वेरिएशन होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है, वहाँ से हमको रिस्पॉन्स मिलता है. तो कैसे क्या है ये प्रोसेस, हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं क्या है. आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्टीम पावर प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 4 कंपोनेंट होंगे: टरबाइन, कंडेंसर, वाटर पंप, फीड पंप, सॉरी, एंड दिस इज द बॉयलर. काम क्या है टरबाइन का, ये हीट एनर्जी को फर्दर क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा. कंडेंसर ये स्टीम को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. फीड ये जो लिक्विड है उसको फीड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा. और बॉयलर जो फीडेड वाटर इनसाइड में बॉयलर आएगा उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको क्या करेगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा. लेकिन उससे पहले जो आपका लिक्विड रहता है सेम टेम्परेचर का, वो सेम टेम्परेचर के लिक्विड को सेम टेम्परेचर के वाटर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वेपर में, ठीक है. तो वो लेटेंट हीट लिबरेशन की बात वहाँ पे आ जाएगी, ठीक. अब यहाँ हम देखते हैं एक टीएच डायग्राम. टेम्परेचर इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस वाई, एंट्रोपी इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस. नाउ सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2. From process 1 to 2, isentropic compression process of 1 to 2. In this process, that entropy is constant while the temperature decreases. And now from 2 to 3 process, what happens? From 2 to 3 process, temperature is constant while some amount of heat energy is extracted. Now what happens during the 3 to 4 process? 3 to 4 process, some amount of heat is required to the working substance. That heat would be in the form of this amount. Now 4 to even 1 dash, what happens inside the boiler, जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं और उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है. यहाँ फर्दर वो जो लिक्विड होता है अब वो सेम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर ये वेपर सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर 1 डैश से भागता सुपर हीटेड स्टीम तक बढ़ता है, ठीक है. फर्दर ये जो सुपर हीटेड स्टीम है ये हमको कहाँ पे एंटर करा देते हैं, टरबाइन में, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस the work done will be performed as an output. Now if we see the result in the form of efficiency for the Rankine cycle, then the efficiency for the Rankine cycle would be in the term of the ratio of W net as well as Q. What is the W net? It is the difference in between the turbine work as well as pump work
The Q1 is what? Actually, Q1 is the amount of heat supplied to the boiler. Now, during the 1 to 2 process, we get work done by the turbine, and work done by the turbine would be the difference at enthalpy at point H1 and enthalpy at point H2. It means H1 and minus H2 give the turbine work. During the 3 to 4 process, the pump would consume some amount of work, and that consumed work uh, will be in the form of difference in between enthalpy at point 4 as well as enthalpy at point 3. H4 minus H3 would give the work done consumed by the pump. Because the H4 minus H3 is very smaller in comparison to this amount, so we can say the efficiency would be expressed in the form of H1 minus H2 upon H1 minus H4. Okay. Now, how to increase the efficiency of Rankine cycle? Definitely, if we have to increase the Rankine cycle efficiency, then we have to lowering the condenser pressure. Here you can see this expanded area. This expanded area would come in the TH diagram, and definitely the efficiency of Rankine cycle would be in then definitely Rankine cycle efficiency will increase. Okay, and at point 4, here you have to decrease the pressure. It means you have to lower, you have to reduce the amount of pressure inside the compressor. मीन्स प्रेशर 4 to 4 डैश हो रहा है, तो टेम्परेचर भी 4 डैश हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, ये यहाँ पे साइकिल आएगी, एंड देन 1 डैश से 2 डैश, यहाँ पे कुछ ज़्यादा फीड करना पड़ेगा हमको स्टीम जो लिक्विड होगा फीडेड वाटर के लिए, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, तो हमको ये यहाँ पे जो है क्या होगा, स्टीम इज सैचुरेटेड मिक्सचर ड्यूरिंग द कंडेंसर. P decreases, that means T decreases, the temperature of the heat is rejected. Now, further, if we do this, that is P will be P will decrease, then T also decreases. That's why the temperature of heat is rejected. And in the further step, the net work output will increase. Then additional heat input requires at point 2 to 2 dash. यहाँ की हम बात कर रहे थे 2 और 2 डैश में एडिशनल हीट इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू नेट वर्क डन के. ठीक है. फर्दर, द कंडेंसर ऑपरेटिंग प्रेशर इज लिमिटेड बाय द टेम्परेचर. साइड इफेक्ट क्या होगा? लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर इंक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम एट द फाइनल स्टेज ऑफ टर्बाइन. Here you can see the various type of manipulations if you have done, then the efficiency will be increased. Now I would like to introduce another name, that is cogeneration. What is the literally meaning of cogeneration? Okay. Basically, the cogeneration is very important topic in the point of view of in the exam point of view, or in the industrial industry point of view. If we are talking about the cogeneration, then definitely we are talking about we are talking about some points related to the manage the waste heat. Okay. Now, in the production of electricity, some energy is rejected or waste heat. ठीक है. क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं तो हीट या
कुछ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। हम उस वेस्ट एनर्जी का पूरा पूरा तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हीट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 2 हीट सोर्स, द फर्स्ट वन बीइंग द फ्लो रेट, वेस्ट हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस, जो एग्जॉस्ट गैस से जो बाहर वेस्ट हीट हो रही है उसको हम पावर प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं को जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं ये 120 किलो वाट जो है एनर्जी यहाँ पे बॉयलर में जा रही है। फिर फर्दर हीट जो एनर्जी हमको यहाँ मिली, फिर फर्दर टरबाइन के थ्रू हमको केवल 20 किलो वाट जो है एनर्जी हमको साफ्ट में मिल रही है, ठीक है। बाकी की जो एनर्जी है वो 100 किलो वाट जो है वेस्ट हो जा रही है, ठीक। तो इस 100 किलो वाट को हमको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए को जनरेशन कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो को जनरेशन क्या होता है, बेसिकली द को जनरेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी from the energy source, heat or electrical heat, such as heat as well as electrical power. If we express the utilization factor, the utilization factor may be expressed in the form of network done, QP dot as well as heat supplied. The utilization factor equals to the 1 minus Q out upon Q in. So in this way, we have established lecture related to the steam power cycle. Okay. तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा मोटिव यही था कि आप यहाँ पे कम से कम ये चीज़ें समझ जाए कि भाई क्या काम होता है एक्चुअली में स्टीम पावर साइकिल। ये सारे मैनिपुलेशन यहाँ पे किए गए हैं, अगर ये सारे मैनिपुलेशन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हीट बढ़ेगी, ठीक है। तो मैनिपुलेशन फीड वाटर हीटर पंप 1 पंप 2 ये सारे मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं जिससे कि फाइनली स्टीम पावर साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड फीड वाटर हीटर? फीड वाटर हीटर एक्चुअली होता क्या है? फीड वाटर हीटर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट्स, ठीक है। क्या होता है ये क्लोज्ड फीड वाटर हीटर होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है एक्सट्रैक्टेड स्टीम से फीड वाटर के लिए, ठीक है, विदाउट एनी मिक्सिंग टेकिंग प्लेस। द टू स्टीम्स नाउ कैन बी एट डिफरेंट प्रेशर सिंस दे डू नॉट वर्क। Here you can see superheating the steam to high temperature with reheat. The reheating takes place inside the Rankine cycle. Then definitely the efficiency of Rankine cycle will increase. So I think basic fundamentals related to the Rankine cycle I hope कि clear होगा। Thank you. If any queries arising in your mind, then just go in comment box and write. I will respond for all those questions. Whatever you are asked, doesn't matter कि आसान क्वेश्चन है कठिन क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू रैंकाइन साइकिल अगर कोई भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। सबसे पहले चीज़ें आनी चाहिए, आने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो अगर बुक्स वगैरह पढ़नी है रैंकाइन साइकिल के लिए कोई बुक्स पढ़नी है तो सेंजर की बुक पढ़ सकते हैं, आर के बंसल की बुक पढ़ सकते हैं। टीएच डायग्राम मैंने बता दिया, ऐसे ही सेम तरीके से किसका डायग्राम में प्लॉट हुआ पीवी डायग्राम का कर सकते हो। उसमें वाई एक्सिस पे क्या होगा प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या होगा वॉल्यूम, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम वगैरह बढ़ेगा। प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन, देन कंडेंसर में क्या होगा हीट एक्सट्रैक्ट होगा,
एक्सट्रैक्ट होगा अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या होगा उसकी वैल्यू टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, और वो जो स्टीम रहता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।